I'll just write down in between, and then when they come. No. We have not done up till now cyclic compounds. Cyclic compounds are that mean? Pहले हम लोग open chain compounds करें, ठीक है? No. I just stay with it.
Absolute science. Now let's come to, for example, these non-hydrocarbons. Now, for example, every organic compound, yeah, every organic compound has got two parts. Like just like our name, okay? Our name contains what? Like Sachin Tendulkar. Okay. Now Sachin is the first part. Tendulkar is the surname. So surname is like a functional group, which completes the name. If somebody, you go for the interview and you actually what? They ask you your name and you say, I'm Sachin. Then they ask what? The moment you say, I'm Tendulkar, then he said, Tendulkar what? Then he says Sachin. I mean, either way, you are actually what? In completing the name, I understand. Sir, my name is Tendulkar. Okay? My good name is Tendulkar. Then they ask the first. The moment you say, my name is actually Sachin, then they ask for the second part of the name. And then, that means whenever you were small, okay, you were small, for example, that time, the first sentence, okay, somebody actually what, for example, teachers use what? Your name. Okay? And what, the moment you say, I'm Sachin, then your parents say, don't tell only Sachin, tell Sachin Tendulkar. Okay? Why? Because you have to complete the name. That's the meaning of it. So likewise, organic chemistry, which are non-hydrocarbons, they have got two parts. One is said to be the first part, which is called as what? Alkyl radical or alkyl radical. What is this alkyl radical? Look at this. Understand this. Alkyl radical is nothing but what? Okay. Now, alkyl radical is what? What is the meaning of alkyl radical? It's not common, like a first name. Okay. Now, what is alkyl radical? If you see, for example, here we have, for example, methane. Look at this. Methane. CH4 is the formula for methane. Methane को आप कैसे represent करेंगे? CH3 bond H. Okay. इसमें से one hydrogen you remove. Why? Because unless you create a valency, free valency, you cannot add one functional group. I mean, you cannot add another group basically. Okay, so what is this? This monovalent unit. Mono means one. Valent means valency. The unit which is having one valency obtained by removal of one hydrogen atom from alkanes, from a parent hydrocarbon. जब आप एक hydrogen remove करेंगे, then definitely that resulting unit is called as what? Alkyl radical. So इसका methane का नाम क्या हो जाएगा? No longer a compound. It has become what? A radical, which is methyl. उसका ending YL. वैसे ethane देखो C2H5, C2H6, sorry. You write in this manner C2H5 bond H. Here, so आपको क्या मिलेगा? One remove one hydrogen atom, क्या मिलेगा? C2H5 dash. यानी ये complete. सचिन, अर्जुन, अंजलि, रमेश, ऐसा करना. ठीक है? So, for example, Dr. Ramesh, his father, Sachin Tendulkar's father. Okay. Then, what is important over here? Dinesh, his brother, Nitin, cousin brother. So, yes, sir. So, हाँ, क्योंकि तेंदुलकर एक बुक मैंने पढ़ा, उसमें पूरा दिया. तेंदुलकर करके एक बुक है. Okay. हाँ? हाँ. Now, what is important over here to understand? Suppose, for example, here
So methyl, ethyl, propyl, butyl, pentyl ऐसे करके आते हैं. Because methane, ethane, propane, butane तो ANE को कैंसिल करके वायल जा रहा है. ठीक है? तो वायल क्या है? इंडिकेट करता है that this is a part of the compound. Okay? So one can say, for example, here. Now, what is important? Now, second part, Sachin Tendulkar. Now, Tendulkar is nothing but a surname. So, likewise, as we have, for example, different people are having different surnames or family name, we can say. Same way, there is this particular hydrogen which has been replaced. Something has to be added in place of hydrogen. So, suppose आपने X वहाँ पे X add किया, तो उसको halide बोलते. X means what? Chloride, bromide, iodide. Ending में आपको chloride, bromide, iodide. अगर वो prefix बन रहे हैं, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो. ओके, यानी प्रीफिक्स में आएगा तो जैसे फॉर एग्जांपल लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे जब प्रीफिक्स में लिखते हैं तो उसको क्लोरो लिखना है, ब्रोमो लिखना है, आइडो लिखना है या फ्लोरो लिखना है. सपोज तुमने OH डाल दिया H के जगह पे तो अल्कोहल फैमिली, ओलिक फैमिली, ये तेंदुलकर, ये खान फैमिली. कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिल का मतलब क्या है? यहाँ पे दूसरा फैमिली. ओके, देन फॉर एग्जांपल COH group, that is COHU. COHU is nothing but what? आपको carboxyl group है, which is carboxylic. For example, acetic acid which is there in vinegar is carboxyl. It's an organic acid. अभी organic acid कोई solid भी रहता है, liquid भी रहता है. जैसा अपना oxalic acid solid है, जो टोमेटो में oxalic acid contains what? COH. It's a dicarboxylic acid. है दो carboxyl group. Okay, tartaric acid इमली में जो रहता है acid, जैसे हम लोग ने एसिड बेसिस सॉल्ट्स में किया है, उसमें 3 कार्बोक्सिल ग्रुप है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड. तो ऐसे करके मोनो कार्बोक्सिल यानी एक कार्ब, मोनो का मतलब हुआ डाई मींस 2, ट्राई मींस 3 या द ट्राई साइकिल. ऑटो रिक्शा इज अ ट्राई काइंड ऑफ फॉर एग्जांपल. ओके, अ ट्राई टायर काइंड ऑफ फॉर एग्जांपल व्हीकल. ओके, रिक्शा क्या है? रिक्शा नॉर्मल रिक्शा अपना फॉर एग्जांपल वो भी ट्राई साइकिल, ठीक है ना. ओके, बाइसाइकिल, मोनोसाइकिल भी कहते हैं. जो अपना सर्कस का ओके. सुनो, अगर CHO अल्डिहाइड, अगर आपने फॉर एग्जांपल एक ऑक्सीजन को निकाल के एक हाइड्रोजन डाल दिया इधर, ठीक है, ये दो ऑक्सीजन है, उसमें से एक ऑक्सीजन निकालो, CHO, दैट इज अल्डिहाइड ग्रुप. अल्डिहाइड ग्रुप जैसा अपना बादाम में यू गेट अ पर्टिकुलर स्मेल, इट्स कॉल्ड बेंजाल्डिहाइड, वो अल्डिहाइड ग्रुप है. ठीक है. ओके, सुनो, likewise for example C double bond or ketones, like आप पिस्ता आइसक्रीम खाते हैं, उसमें फ्लेवरिंग जो एजेंट है वो कीटोन्स का है. एसीटोन जो नेल पॉलिश रिमूवर है वो कीटोन से बना है, उसमें नेल पॉलिश रिमूवर में. ठीक है. ओके, तो एनी फ्लेवरिंग एजेंट, ठीक है, वो कीटोन्स में. ओके, कीटोन्स के. ओके, देन लाइक फॉर एग्जांपल सिनेमन, दालचीनी, ये सब अपना ये सब cinnamon है ना? Cinnamon, sorry. Okay, then this is nothing but what? This is OR, means what? For example, alkoxy. Alkoxy is an ethyl group basically. Look at this. Now इसका general formula क्या है? देखो, वो जो R इधर लिखा है, यहाँ पे free valency है. That means what? यहाँ पे R bond अगर X हुआ, तो उसका पूरा family का नाम क्या है? Alkyl halide. अगर suppose for example ROH है तो alcohol, don't write alkyl alcohol, but we write alcohol. What about this RCOH, means carboxylic acids? RCHO aldehydes, ये नया था, aldehydes. ठीक है. फिर C double bond हो जहाँ group में रहेगा ketones, that means this is ketone. But either side you have alkyl radicals. Why? Valency of carbon 4 है. So दो valencies are accounted by oxygen, and remaining 2 valencies are accounted by what R. I will give you the example. Then ROR, ether. That is whenever you point one oxygen atom in the center, and the either side you are flanked by what 2 alkyl radicals, then it is called as what ether. Now let me tell you one thing. इसमें कुछ families इसमें carboxyl group यानी functional group में carbon है, तो R can be equal to H. Because देखो, अगर समझ इधर R H के जगह पे in place of R if I write H, क्या हो जाएगा? HOH. HOH is not an organic compound. तो यहाँ पे अगर H डाल दिया तो HX आ गया, यानी HCl, HBr, HI आ जाएगा. But HCl, HBr, HI inorganic mineral acid है. तो यह R क्या होना चाहिए? R should be what? Methyl, that is methyl ethyl propyl. But यहाँ पे RH हो सकता है. क्यों? क्योंकि ये कार्बन है इधर. Okay? That means what I am trying to tell you is that means this R can be equal to, now R can be equal to, or R may be equal to H, or maybe CH3, maybe C2H5 and so on. But तुम्हारे syllabus में ये दो खाली alkyl radical. So let us understand, for example, the various
members of this family and let us build up this homologous series. But before we build up that, please write down this. This is non-hydrocarbon. Okay? क्या हुआ? देखो फिलहाल टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा डिफरेंट दिया, ऐसा फॉर्मेट में नहीं दिया, इसलिए प्लीज राइट डाउन. This H which we have kept वो यूज करेंगे, इससे कि आपको आइडिया मिले. लास्ट टाइम कोई H हम लोग यूज because हमने yeah इधर देखिए अभी जहाँ भी टाइम नहीं है, we have to continuously complete our portion and go for revision. Remember, revision board exam like December we are conducting our pre-board, okay, a long test, long examination. इसमें चिली वो विटामिन से सी विटामिन ए इसमें वो भी नॉन हाइड्रोकार्बन साइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन aromatic वो क्या सकता है? विलन लिखा आपने ethers. Let's come to the country and then okay. Now, very good. That is complete. Basically, functional group क्या है? It is an atom or a group of atoms.
which defines or which completes the structure of organic compounds and also at the same time determines their properties. Tendulkar is giving the important aspect of its properties, the properties of its family. Okay, Mother tongue Marathi, his staple diet is what? Chunka bhakar, right? And various, for example, that is characteristics you come to know, okay, from this particular Tendulkar, not Sachin. Sachin is not going to be responsible for actually what? For his characteristics. But Tendulkar represents that he belongs to Maharashtra. He gets his native place will be in Maharashtra, for example, that is a state. Likewise, for example, his staple diet will be what? For example, these things which are actually what? Available in Maharashtra and not, for example, available in Switzerland. Why? Because people, they actually go for different fruits which are not available in Maharashtra, but they actually eat. Just for example, avocado. Avocado इधर तक website के पीछे पड़े क्यों? हमारा diet है, blueberry ये सब जो for example diet है या जो fruits है available यहाँ पे उसको खाना चाहिए. People they say why? आपका body का जो composition है उसके हिसाब से बना है. When you go to Switzerland, you can have those things, but not this the place where you are staying. Why? Because कल को नहीं available होगा. Body will crave for it, and finally you will have trouble in your life. Basically, I've understand this. Okay, तो आपको ये याद रखना है कि whatever things are available in this state, ठीक है? People are running forward for various things which are not available. और जो यहाँ available है वो खा रहे नहीं. That is just an example because our thinking depends upon what we eat, basically. Okay, thought process. Anyway, now let us come to the basic idea of, for example, the different families. Okay, so let us understand this. Okay, ye sabka ho gaya? Anything? Okay, now this is related with organic chemistry because we are definitely all organic materials are nothing but what? For example, edible, basically, because they are obtained from plants and animals. Remember, ये पूरा organic है. Okay, and let us understand this. Okay, let us understand. Because the first family, alkyl halides. Family name, general formula. RX. सुनो, ये इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? Halides, halogens, chlorine. Functional group, bond X, which can be chlorine or chlorine. Fluorine, bromine, and iodine. सुनो इधर. Okay? Yeah. Then functional group examples. Examples देखो. R के जगह पे आप क्या डालेंगे? CH3. Suppose CH3 हम उसमें fluorine डाला. What is the common name for this compound? Methyl. पहले methyl को account करो. Methyl. Look at this. Methyl. Fluorine. All of you listen to it. All your right. Suppose you write C2H5F. What is that? C2H5 methyl. Methyl and then what? Fluoride. Right. जब suffix लिखेंगे तो आपको fluoride तो IDE. Okay, एक एलिमेंट रहेगा तो हमेशा IDE आएगा. ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स रहेगा तो ITE आएगा. अगर ऑक्सीजन एटम एक्स्ट्रा है, that means AT, सल्फेट, सल्फाइट, IT. But अगर सब एक एलिमेंट है, then it is ITE. Remember, okay? Yes, let us see, for example, यहाँ पे. Now next one is what? For example, if I just want to write further, but for the time being, so for example, homolog we can take, and then let's see, for example, CH3 and Cl. Well, let's basic, CH3, Cl. What is this? Methyl. It is. What about C2H5Cl? Methyl. Okay. Now suppose, for example, CH3Br लिया. Rohit, can you tell me CH3Br का क्या नाम हो सकता है? Methyl की ethyl.
Yes. Okay. This is CH3Br. And then what about C2H5Br? Sir, ethyl bromide, sir. Yes. Okay. Okay. Now, so now iodide planet. Now, for example, CH3. Okay. What is this? Methyl. Iodide, sir. Iodide. Okay. What about C2H5? Ethyl iodide, sir. Ethyl. Okay. These are all, for example, common name. Now, what about IUPAC name? So, no. International naming, whenever you're writing, okay, first always remember, now whenever you have only one or two carbon atoms, there's no need to number it. Okay, why? Because दो carbon atom में numbering नहीं होता यार, तीन से ज़्यादा होता है, okay, like तीन में branching होगा then only. Now you see, one only. So now here, for example, when you write, for example, whenever you fill up any application form, always they tell you to write the surname first. Where your hall ticket, when you get admit card, आपको पहले hall ticket में आपको पहले surname लिखना पड़ेगा, बाद में अपना first नाम लिखना पड़ेगा, but then middle name है जो भी, okay? So surname, middle name and your first name. So likewise in the case of IUPAC, we always give preference to the functional group. So functional group में क्या हो जाएगा? When it's written in the front, that is actually what? Fluoro. Fluoride का fluoro. Cancel IDE and O that. Fluoro. Ending में ID आ जाएगा, but जब वो start में लिखते हैं तो fluoro. Now imagine करो, now this particular part I told you, that imagine करो कि for example here, अगर पहले क्या था, before this compound it was methane, यानी ये compound है ना, it's a derivative of methane. That means we are that this particular name should reflect that parent alkyl. आपके नाम में आपका parent का नाम झलकता है. Means why? Because you have, that means it shows a kind of relationship clear with your parent. पेरेंट का नाम पे रिफ्लेक्ट होगा. लेट मी टेल यू वन थिंग. सो यहाँ पे आपको पेरेंट अल्केन कौन सा है? मीथेन. तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्लोरोमीथेन. आई अंडरस्टैंड. यानी ये मीथेन नहीं है, बट मीथेन कंटेनिंग फ्लोरीन, और वी कैन से मिथाइल रेडिकल अलोंग विद क्लोरीन, क्लोरोमीथेन. ओके, इसको क्या बोलेंगे? C2H5. There, look at that. Chloroethane. What about this? Chloromethane, chloroethane, bromomethane, bromoethane, idomethane. Systematism is the hallmark of this organic chemistry. Although large number of compounds are there, but highly systematic. Okay? Let us see. This is chloroethane. This is क्लोरोमीथेन. ठीक है, इसका नाम क्या होगा? क्लोरो. दिस इज व्हाट? ब्रोमोमीथेन. साथ में लिखना है, नो गैप्स. इसमें साथ में लिखना है. दिस इज व्हाट? ब्रोमोमीथेन. H means 2 carbon atom. Meth means 1 carbon atom. Okay? Ido. एक मिनट. Idomethane. This is idomethane. बोलो. 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 ठीक है. हाँ. C2H5I. Okay. Now these are the two homologs. And what is the meaning of homologous series? The series of members belong to the same family, differing with respect to each other by CH2 group. Last time I told you, methane और ethane में क्या difference है? CH2 group, 14 mass unit. Okay. So whenever you have point, for example, two subsequent members of the same family, okay, having a difference of CH2, that means that is called as what? Homologous series, and those are called as homologs. Remember. Okay. Because of next. Is it? It's better.
Now look at what is important over here. Next family, what is that? Alcohols. Okay. Now this family belong. हम लोगों ने दो ही member लिए हैं. Okay. उसके बाद क्या हो जाएगा? जैसे for example ethyl के बाद propyl. But propyl में there is a. I'll just show you that also. Okay. Propyl के बाद there are isomers possible. Now let's understand this. Propyl भी ले लेते हैं because it will be लगेगा दोनों चीज हो जाएगा. Okay. For example IUPAC as well as. Okay. So this particular. Now let's understand. Suppose तुम्हारे को because we have already accustomed with IUPAC now. Okay. But that was for alkanes, alkenes, and alkynes. So let us see. For example here. Understand this. Suppose for example CH3, CH2, CH2. अब ये तीन कार्बन एटम का चेन बना. ठीक है ना? और इधर क्लोरीन डाल दिया. पहले एक सिंपल थिंग. All hydrocarbons are parent hydrocarbons. Basically alkanes are parent hydrocarbons. देखो. Now CH3, CH2, CH3 इसका नाम क्या है? प्रोपेन. ठीक है. अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज तुमको ध्यान में रखना है. ये प्राइमरी कार्बन एटम है, ये सेकेंडरी कार्बन एटम है, ये प्राइमरी कार्बन. ये दो टाइप का कार्बन एटम. Okay, suppose Sophie, what she does, removes this hydrogen atom and replaces by what? Let us say chlorine. Suppose 1 degree. ठीक है. And let us say for example दूसरा एक स्टूडेंट है CH3, CH, okay, and यहाँ पे उसने क्या किया? प्राइमरी कार्बन एटम को रिप्लेस, हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के बजाय एक हाइड्रोजन सेकेंडरी कार्बन एटम से रिप्लेस किया. See, that means ये compounds दोनों they are isomers of each other. How? If you see for example the molecular formula of these compounds, ये दोनों compound का molecular formula same है. 1, 2, 3, C3. ये देखो 3 + 2, 5, 5 + 2, 7. और इसको प्रोपाइल क्लोराइड. ठीक है ना? पर ये कौन सा प्रोपाइल क्लोराइड है? This propyl chloride और ये देखो इसका भी सेम फॉर्मूला है 1, 2, 3. ठीक है. और 7 हाइड्रोजन और एक क्लोरीन. तो ये दोनों आइसोमर्स होते हैं. Compounds having same molecular formula but different structural arrangement, okay, are called as isomers. Now these isomers are nothing but what? For example, having different physical properties but similar chemical properties. Their methods of preparation are same. So now कोई पूछेगा सर इसका naming क्या होगा? Now see, common naming क्या होगा? This carbon atom is having chlorine, but it's a straight chain carbon atom. तो इसको क्या लिखेंगे? N. N means normal. ठीक है. कितने कार्बन एटम है? 1, 2, 3. 3 कार्बन एटम इज prop. ठीक है. But since it is actually अगर एक वैलेंसी फ्री है इधर, तो क्या लिखेंगे? प्रोपाइल. N प्रोपाइल. ठीक है. और फिर क्या है इधर? क्लोराइड. तो N प्रोपाइल. Just like ethyl chloride, आपको N प्रोपाइल क्लोराइड लिखना है. Now अब इसका नाम क्या होगा? First let us go for the common name. WW. These are common. अपना pet name, nickname जो बोलते हैं ना, चुन्नू, मुन्नू, टुन्नू. ठीक है. तो ये सब जो है, for example अपना pet name. And whenever there's pet name, the affection doesn't have any rule. तो बोलेगा सर इसका नाम ऐसे क्या रखा? Affection. Okay. Affection में कोई rule नहीं रहता. ठीक है ना? Okay, so therefore यहाँ पे जो बोलोगे से N propyl, N क्यों है? आप ये, but in the case of our theory, we have explained N का मतलब है normal. But यहाँ पे there's a branch, on the second carbon atom, secondary carbon atom, there is a halogen atom. Now look at it. इसका नाम N propyl नहीं होता. Here, this secondary carbon atom is called as what? Secondary का sec. Okay, secondary का आपको short form क्या रहेगा? Sec. Now sec, on the secondary carbon atom there is a chlorine. Okay, now just say this. There are 3 carbon atoms over here. So यहाँ पे क्या लिखेंगे? Sec. अगर इसको just I have showed you this way. There is a free valency of the secondary carbon atom. So we write sec. And then how many carbon atoms are there? 3. Then 3 carbon atoms. Prop. But it's a free valency. One monovalent unit is there. एक monovalent unit यहाँ पे propyl. But इधर chloride आ गया. क्या हो जाएगा? Sec propyl chloride. ये देखो N propyl chloride और sec propyl chloride में क्या difference है? Chlorine atom is on the primary carbon atom and here chlorine atom is on the secondary carbon atom. That means this particular thing indicates that ये chlorine secondary carbon atom में free valency पे है
और ये क्लोरीन ओके प्राइमरी का यानी इधर इधर या इधर दोनों में से कोई भी जगह से। अब इसका IUPAC नेम, IUPAC नेम हाउ विल यू डू इट? नाउ यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट थिंग है, यू गिव द प्रेफरेंस टू फंक्शनल ग्रुप, मींस यू स्टार्ट द नंबरिंग इन सच अ मैनर, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3, बट हाउ टू नंबर इट? यू स्टार्ट फ्रॉम हियर और हियर, फंक्शनल ग्रुप, योर VIP पर्सन इज सिटिंग ऑन दिस टेबल, आपको खाना इधर से परोसना, क्योंकि आपका VIP ओके गेस्ट इधर आ गया है, इधर आएगा तो इधर से क्या आप नंबरिंग करेंगे ना, क्या व्हाट इज द नंबर 1 2 3 और द फर्स्ट कार्बन एटम क्लोरीन इज प्रेजेंट, तो क्या लिखेंगे 1 क्लोरो प्रोपेन, बट नाउ यहाँ पे तो VIP is sitting on the second table, 1 इधर से जाओ या इधर से जाओ, एक ही बात है, second, that is here 2 chloro propane, प्रोपाइल नहीं आएगा, प्रोपेन डेरिवेटिव, अगर इसको जोड़ दिया तो क्या आएगा प्रोपेन, that means it reflects from the parent alkyl, इसको जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा प्रोपेन, यानी you are removing hydrogen atom and replacing by chlorine, but it has been earlier what was the name of the compound, यानी हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो प्रोपेन, ये भी प्रोपेन है। आपको कभी भी एक ऐसा स्लिप लेके रखना है जैसे कि आपको समझ में आए कि वो कौन सा पैरेंट अल्केन जिससे आप लोग ये कंपाउंड सर बोर्ड में तो ले जाएंगे सर, सर पीछे का बनता है, पीछे का सर आगे बन जाएगा आपका करेंगे थोड़ी देर बंद कर दे, प्लीज राइट डाउन दिस ऑल ऑफ यू, पैन थोड़ी देर ठीक है, हो गया सब, have you written? Now I would like, I will give you the name, I will give you the structure and you have to write down the name of this compound. Let me give you, okay, ठीक है, ये लिखा सबने, okay, Citra, did you get it? बोलिए, हाँ हाँ यस तो now look here all you, let us see, Krish, प्रियांशु मत तू तब स्वेटर रेडी क्यों पहन के आया? क्या मैं ये पहन के बस ओके हो गया सबका, थोड़ी देर में अभी फैन बंद हो जाएगा, एसी चल रहा है, ओके दोनों इधर देखो, अब नाउ दिस कंपाउंड ऑल ऑफ यू C4H9Cl, that is butyl chloride, but is it N-butyl chloride, sec-butyl chloride, or for example any other butyl chloride? So let us understand 3 isomers are possible for this, यानी जितने कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे isomers बढ़ते जाएंगे, उसका जो अरेंजमेंट है ओके वो डिफरेंट होता जाएगा, you can see प्रोपाइल में 2 isomers है but ब्यूटाइल में 3 isomers है, तो अगर सपोज 21 कार्बन एटम है तो कैन यू इमेजिन हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल विद C21 कार्बन एटम्स, 5430 साइज, तो आप तुम बोलोगे सर 21 आइसोमर्स तो नहीं हो गए, 5430 कंपाउंड्स, एक 21 कार्बन एटम का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करेंगे यू विल गेट 5430 you know kind of different compounds, that is the strength of organic chemistry. So now let us understand this particular part. Have you written this? Now let us come. नहीं लिखा है. The first family we are dealing with, that is alkyl halides. Okay. लिखा सबने? Now let us come to पहले complete कर लो इसको. Now anybody can try the name of these compounds, common name. ये straight chain of 4 carbon atoms. क्या हो जाएगा?
ये कंपाउंड का नाम क्या है? One, this is for example 4 carbon atoms. So it is N-butyl. 4 carbon atoms. Butyl chloride. What is IUPAC name for this compound? Yeah, one chloro. Very good. Excellent. Wonderful. Again, अभी अगर आपको compound आ गया, so after 2 or 3, for example, practice, you become master in organic chemistry. Second degree carbon atom. Second butyl chloride. Yes. Excellent. Chlorobutane. Yes. देखो, simple है. यहाँ पे important है. H यहाँ कर दिया तो क्या? butane sir. यहाँ पे आप देखेंगे तो ये भी ब्यूटेन ही है, ठीक है? But let us see this particular compound, ठीक है? But before that, sec butyl, ठीक है? अब सुनो, एक important चीज है. Sec butyl का IUPAC नाम क्या होगा? यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4. Why this side? Because second carbon atom में functional group is present. Therefore, functional group means like a VIP. आपको यहाँ पे जो when you are serving the food, you have to see to it that you yet give the lowest possible number to that carbon atom which is bearing the functional group. Double bond में आपको double bond का preference देना है. Triple bond में triple bond. But alkanes में क्या करना है? Branching को preference देना है. Subsequent को. Okay, दोनों का combination also we'll see later on. But now just see this. What is this? 2 chloro. 4 carbon atom. 1 carbon atom, match 2 carbon atoms, H 3 carbon atoms, 4 carbon atoms, bute. Okay, so 2 chloro bute. But since it's a carbon-carbon single bond, look at this. 2 chloro butane. Okay, अब इसको देखो यहाँ पे थोड़ा सा देखो, for example, Icse situation. Now just see this. This carbon atom is attached to how many carbon? Not 1, not 2, not 3, but 4. For example, groups are like that. But how many carbon atoms it is attached to? Important thing. 1, 2, 3. That means whenever one carbon atom is attached to 3 other carbon atoms, it's a tertiary carbon atom. Tertiary or tertiary का third. आपको short form. Okay, so क्या होगा? Third. 1, 2, 3, 4. Bute. Because one valency is free, ये देखो ये valency free है, is a butyl. Then what? Chloride. What is this? Then butyl chloride. Sir, 1, 2, 3, 4. 4 carbon atom butyl. Longest chain, no common name है, ये common name है. IUPAC में तुम सोच रहे हो. IUPAC में propane है. चलो. देखो tertiary means, देखो primary means N. Secondary means sec. Tertiary का TERT. Tertiary का short form. Tertiary का T. Whenever one carbon atom is attached to 3 other carbon atoms, tertiary. Who attached to 2 other carbon atoms, secondary. When it is attached to only one, for example, one carbon atom, that is called primary, or it is called N, अगर straight chain. N का मतलब है straight chain. Sec का मतलब है where carbon atom is secondary, and tertiary का मतलब है when one carbon atom on which, okay, 3 other carbon atoms attached. Okay, that is called as tertiary. Gauring, समझ में है आपको? अब इसका नाम क्या? IUPAC. Who can tell me the name of the compound? Krish, बोलिए. Functional group. Take my last time I gave you that example, okay, of for example, let us say the same thing we are trying to work on. सुनो इधर देखिए. All of you listen to it carefully. So इधर देखिए. No, ध्यान से देखिए. All of you. Yeah. What is important now? Longest continuous chain कितने carbon atoms से बना है? Come on, tell me. Three, very good. 3 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2 पे chlorine है, 2 पे methyl है. एक मिनट.
सुनो इधर देखो यहाँ पे fortunately okay what is important the VIP is sitting on the second table and your friend is also sitting on the second table तो यहाँ पे आपको preference किसको देना है आपको यहाँ पे both are the same table so fortunately for you are not able to give the preference but let me tell you one thing अगर suppose तुम्हारा 4 कार्बन एटम है यहाँ पे VIP is sitting and here your best friend is sitting ठीक है तो आपको नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देना है यानी यहाँ पे आपको नंबर 2 यानी आपको खाना जब परोसेंगे तो आपको वीआईपी को पहले प्रेफरेंस देना है बिकॉज वो बेस्ट फ्रेंड आपको घर का आदमी है वी कैन से ओके बट आई एम लाइक यू नो फैमिली फॉर यू एंड इफ ही और शी इज लाइक अ फैमिली फॉर यू उसको यू कैन अंडरस्टैंड दैट राइट पहले इनको दे दो बट बिकॉज़ ही इज अ डिस्टेंट रिलेटिव और डिस्टेंट फैमिली मेंबर He's a close family member. तो आपको याद रखना है कि क्लोज जो रहेंगे वो एज अ फॉर्मेलिटी वो हम लोग को क्या करना पड़ेगा उनको मालूम है कि फॉर्मेलिटी है इट इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी कि आपको इसको प्रेफरेंस दे रहे हैं तो अगर कोई वीआईपी और आपका बेस्ट फ्रेंड है तो आपको याद रखना है वीआईपी को पहले प्रेफरेंस देना है rather than what best friend because they can understand you ओके अगर यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो आपको ये लॉन्ग हो जाएगा ठीक है तो वीआईपी will eventually what will go out of your house okay without eating the food and that will not be good for you and for him okay so let us understand this particular part okay because hospitality क्या हो रहा है वहां पे आपको प्रेफरेंस देना फंक्शनल ग्रुप को because he is responsible for the characteristics remember okay तो यहाँ पे आपको बॉक्स में डाल दीजिए and then numbering 1 2 3 2 पे क्लोरीन है 2 पे मिथाइल है सुनो इधर देखो it's a derivative of propane 3 कार्बन एटम का चेन प्रोपेन सुनो इधर देखो now 2 पे क्लोरीन है now one student writes 2 chloro ओके फिर सेकंड पे मिथाइल है 2 मिथाइल प्रोपेन दूसरा स्टूडेंट क्या लिखता है 2 मिथाइल 2 क्लोरो प्रोपेन बट दिस आंसर इज रॉन्ग क्यों क्योंकि इंटरनेशनल यूनियन हाँ नहीं दोनों तो सेम अल्फाबेटिकल ऑर्डर जैसे आपका रोल नंबर बनता है स्कूल में तो जिसका सरनेम या फर्स्ट नेम अगर सपोज फर्स्ट नेम से जा रहे हैं जिसका ए से स्टार्ट होता है उसका रोल नंबर 1 जिसका बी से स्टार्ट होता है रोल नंबर 2 लेट जॉइनर्स तो उसको फिर आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर रूल ठीक है ना जो लेट जॉइनर्स है उन लोगों के बाद में हम लोग क्या करते हैं उसको एक मिसलेनियस में डाल देते मिसलेनियस का मतलब है उसको लास्ट रोल नंबर दे देते ठीक है ओके बट जो पहले से स्टार्टिंग से है तो आपका नंबर कैसे बनता है जिसका सरनेम ए से स्टार्ट हो रहा है फिर बी से स्टार्ट हो रहा है ऐसा करके सो इनमें अल्फाबेटिकली ओके इंटरनेशनल यूनियन क्या बोल रहे हैं कि अगर ऐसा if you get for example here if you get this particular thing C comes before M then definitely आपको C को so this numbering or this naming is wrong so one more rule in this particular international naming what is that whenever two you know for example groups are there the alphabet which starts with the you know for example which comes earlier has to be given preference यानी नाम लिखने के टाइम इसमें अभी इसमें देखो यहाँ पे कैसा है 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन 3 मिथाइल 2 क्लोरो ब्यूटेन नहीं लिख सकते okay 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन like that of course we are going to see an IPS right on this part okay right on these 3 isomers okay alkyl halide okay so मैं सबको now one compound I'll give you and you have to tell me the name of that compound ठीक है let us see हो गया सबका Yes, sir. No, sir. देखो पहले हम देखो यहाँ पे तुम्हारा एक टेक्निक देता हूँ जहाँ पे तुमको इजीली फॉर एग्जांपल चेंज करके यू गेट अनदर फैमिली बेसिकली लेट्स सी ओके फैमिली नेम सेकंड फैमिली you can go for okay okay सबका second family is nothing but alcohols ठीक है अल्कोहल्स में क्या हो जाएगा लिसन टू इट इधर दिस वन OH व्हाट इज दिस X की जगह पे क्या आ जाएगा दिस इज व्हाट अल्कोहलिक और हाइड्रोक्सिल ग्रुप व्हाट इज सर गर्मी लग रही है एसी चालू कर सुनो अब इसमें देखो यहाँ पे ये सब हम लोग को ठीक है नो प्रॉब्लम ये तो हो गया इसको निकालना है मान लो क्या रोल क्यू यार जस्ट रिमूव दिस क्लोरीन ठीक है सुनो इधर देखो ये देखो नाउ जस्ट दिस अल्कोहल फैमिली विराट कोहली
Poly family. Okay. So let us see. No, it doesn't. Say why we are telling these celebrities' name? Why? Because you know them. Therefore, we have to. Now, just say CHOH. What is this? Ethyl alcohol. एक मिनट इसका IUPAC ending कैसे होगा? Last में alcohol में which are the two letters? Now, what is the name of the family? Name of the family is alcohol. Alcohol family. Okay, इसका last two letters क्या है? ON. ठीक है? तो आपको क्या करना है? Because it is a derivative of methane. इस बार methane याद रखना. Methane का methyl नहीं लिखना है. Okay, इस बार this particular OL will come as a suffix. ठीक है? तो methane का methyl लिखो. E cancel करो इधर methane का and attach OL. Why? Because दो OL साथ में नहीं आ सकता. Okay? Ethanol. इसका नाम क्या है? Ethyl alcohol. Okay? इसका नाम क्या होता है? Ethane का ethan and then last two letters of alcohol. Look at this. यहाँ पे OH डाल. यहाँ पे OH डाल. यहाँ पे OH. Look at the beauty of organic chemistry. OH खाली आपको. अब देखो सिंपल है. N propyl chloride था तो क्या होता है? Cl था. But now it is actually what? Just write alcohol. इधर क्या है? 1, 2, 3 propane. Now where is the functional group sitting? Now people would like to know, अरे where is the DFP sitting? Imagine अरे first table में बैठा ना. First table में मतलब है तुम उसको point out कर रहे हो. ऐसा pointer ऐसे finger से point नहीं कर रहे. आप खाली ऐसा verbally बोल रहे हैं. Look at the first table. There is the DFP. Okay, so immediately they come to know that first. That means propane. Okay, propane का propane लिखो. Cancel E and one more propane. All one propanol will listen. यानी ये number indicate क्या कर रहा है? What this number is indicating that alcoholic group is present in the first carbon. इसका देखो sec propyl alcohol. बस chloride को change करके तेंदुलकर को change करके होली करना है. Okay, why? Because first name can remain same. Okay, so just see this N propyl alcohol. Sophie, can you tell me the name of this compound? 1, 2. That is propane. The propane. Yes. Now सुनो. अब इसका नाम क्या होगा? Who can tell me? 1, Krish बोलो. 1, 2, 3, 4. क्या नाम हो सकता है? But इसका पहले common name. N-butyl what? Alcohol. Isn't it? Okay. यहाँ पे क्या हो जाएगा? Butane. Sec butyl alcohol. Look at this. Alcohol family name हमेशा end में है common. But अगर suppose for example I will now 1, 2, 2 butane. अगर butane 1 था तो butane it 2 हो जाएगा. Simple. Butane नहीं butane because see I'll give you one important note over here. सुनो ये जो E है इधर जब भी एक वॉवल इधर आ रहा है उसके बाद में फॉर एग्जांपल आफ्टर नंबर अगेन वॉवल कम्स तो आपको वॉवल निकालना पड़ेगा. लाइक ब्यूटेन का ब्यूटान, मीथेन का मीथान, इथेन का इथान, प्रोपेन का प्रोपान, ब्यूटेन का ब्यूटान, पेंटेन का पेंटान, हेक्सेन का हेक्सान, हेप्टेन का हेप्टान, ऑक्टेन का ऑक्टेन, नोनेन का नोनेन, डेकेन का डेकेन. Okay, remember butane 2. Now tell me what about this tertiary butane? अगर OH है that is what? Alcohols. Now common IUPAC. Now इसमें याद रखना है. Now just see this part. Had it contained only this much, suppose इधर H होता, imagine करो. तो इसका नाम क्या होता था? 1, 2 propane 2-ol. Yes or no? Yes sir. Propane 2-ol. इधर क्या? हाँ ये वाला. But इधर H की जगह पे आपको CH3 डाल दिया. In place of H, we are having CH3. So now just see this. Propane 2-ol वैसे का वैसे ही रहेगा. But आपको और ऐड करना पड़ेगा. Now second carbon atom there is a methyl group. So 2 methyl propane 2. बस इसके आगे आपको डालना है. 2 methyl propane 2. Okay, remember this. That means the idea is always जब propane 2 is like a ending, तो आपको हमेशा ये end में रखना है और उसके आगे जो methyl ethyl propyl है as a prefix you write. Remember, okay? So 2 methyl propane 2. Follow ना? Yes sir. ये alkyl halide और commonness है. सिर्फ Cl को replace करके आपको OH डाल दीजिए. पूरा and write the word alcohol and you will find the difference. Okay? Write down the second family, holy family.
ऊपर लिखा है तो लिखा है नहीं, इसमें जस्ट एक काइंड ऑफ डिफरेंस पता है, ठीक है? लिखा सबने? सबने लिखा? देखो आ रहा, प्लीज राइट डाउन. Right. We are building up the topic, so it's like a foundation. तो आपको याद रखना है कि ये अगर एक बार माइंड में आए, 5 times you will write as homework, because you can see the difficulty level of this. Last time also I gave you 5 times. Yes sir. Have you done? Yes sir. 5 times. Yes sir. अलग बुक में. Sir homework sir मैंने 5 टाइम. Please do it next time, so that you know basics. आपने किया रोहित? Please do it next time, so that you know. For example, yes, so you don't forget, because these things actually what you tend to forget very fast, especially organic chemistry. ठीक है? हो गया सबका? No sir. गौरी गौरी मत बोलिए इधर. ध्यान दीजिए. बाजू में पूछो, गौरी गौरी करो. लिखा आपने? पृष्ठ लिखा आपने? अरे हाथ बांध के कुछ नहीं होगा, लिखना पड़ेगा आपको. प्लीज राइट डाउन. Holding your hands will not work much. Bilal. Sir, good night, Families will take together. One is carboxyl, second is aldehyde. Okay, तो क्या होगा? वो easy पड़ेगा. Whenever you are learning carboxyl group, carboxylic acid, you have to learn aldehyde also, because they are actually what? Having the similarity in naming. Yes, let us understand that. इसी चालू करें. हाँ सर, बहुत लग रहा है सर. Because क्या होगा? Carbon dioxide will be actually what? Fully engulfing us. Yes. And our breathing pattern, it will be like anaerobic respiration. Anaerobic respiration. Yes. तब होएगा. इधर आ जाएगा. Okay. Let's come to these two families. Okay, which are actually what? Carboxylic acid and aldehydes. तो हम लोग दोनों families यहाँ पे run करेंगे. Let us understand. When are your exams? 16 November. 16th. आपका कभी है एग्जाम? Same 16 November. Okay. Different news and different dates. लिखा आपने? क्या लिख रहा है? Show me your book. ये क्या है? मैम तो क्या होगा? गाड़ी छूट दो.
All of you done? All of you? Okay, done all of you? Yes. Clear? Let's come to, for example, here. The third family, which is actually carboxylic acid. So let us take together this carboxylic acid. Yes, why not? Okay. Have a break. Nothing to worry. Your comfortability is mine. Okay? So let us understand, because आपका, for example, happiness is mine. But at this moment, let us we should not break the momentum or tempo. Why? Because अपना momentum already gain हो गया है. तो अभी now अगर abruptly गाड़ी रोकेंगे तो तुम्हारा स्पीड क्या हो जाएगा एकदम एक्चुअली. तो इसमें क्या होगा आपको is going to be double sum. So let us just complete these two families. उसके बाद हम लोग will take a break, okay, for your convenience. Now here, this time we are going for carboxylic acid family. Listen to it carefully. What are carboxylic acids? Carboxylic acids are nothing but compounds which are having COH group. इसको कुहू बोलते हैं. Okay? कुहू क्यों बोलते हैं? COOH. Yeah. Why? Because this is the way we can remember that COOH. Now you will say, sir, one student asked me one question, sir. ये आप instead of writing COOH, आप CO2H क्यों नहीं लिखते? Because ये functional group जो है ना, this particular carbon, look at this. हम लोग ऐसे क्यों नहीं लिखते? Because this particular carbon atom. Yes, because in look at the nature like oxygen atom. One is with hydrogen, other is alone. That is not hydrogenated. That means ये अपने इन लोग इसका nature और इसका nature है. ये reactive oxygen है, ये non-reactive. Remember, because इधर ही addition होगा, यहाँ पे attack होगा. Why? Because there is single oxygen atom. Okay, यार. Okay. Now, what is important over here to understand is that common name. Now, see, अभी इसका, for example, the general formula is RCOH, where R can be what equal to H, or R can be equal to CH3, or R can be equal to C2H1.
5 or C3H7, whatever. Okay? But now suppose functional group is what? Bond COH. Now example, suppose R, H, in place of R, what we do, we write H. And if I write H over here, what we'll get? HCOOH. R की जगह पे आपने क्या डाला है? H. What is the common name of this compound? Now this compound is present in red ants. Now see, acid का नाम sources से बना है, like from which source it has been obtained. Okay, so this particular acid has come from the word formicus. So formicus का form and attach Icse and acid. हमेशा acid. Formicus means what? Red ants. जब हम red ants bite करते हैं, we have done in acid bases. When they bite, okay, they inject this acid in your body. That's why it produces burning sensation. Yes. Huh? Yeah, we rub. Yes. Absolutely right. याद है. हाँ, पढ़ते हैं. अब सुनो, formic acid, इसका Icse और acid ending होगा. ठीक है? But you know when there's only one carbon atom. Ranveer, only one carbon atom. One carbon atom is methane derivative. मीथेन का मीथान लिखेंगे, ठीक है? और फिर यहाँ पे ओके एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड का OIC, इधर OIC एंड एसिड आ जाएगा. OIC एंड एसिड यहाँ पे IC एंड एसिड. ये देखो, look at this. Ic acid, oic acid. Okay, here look at this. IC. Oh. My God. These are called homophones. These are called homophones. Why they are called as actually what? See, I can see what is this. For example, it sounds the same, but यहाँ पे एक letter, एक sentence बन रहा है. Part in sentence we can say. Okay, I see. Now I and C is the homophone. Like for example, C, I see. Okay, O I see. O I and then C का ये ना letter हम लोग alphabet लग रहा है C. I see. Ethanoic acid. Ethanoic acid, propanoic acid, butanoic acid, pentanoic acid. That way, okay? यहाँ पे formic acid. Now just see this. इसका नाम क्या है? It has come from the word acetum, which is there in vinegar, acetic acid. So acetum का acid लिखने का. And then IC and acid, all of you have to write. Look at this. Acetic acid. IC and acid one बोल रहे. Acetum का UM है ना? तो UM को निकाल के you put IC and acid. But there are two carbon atoms. Two carbon atoms is how many? What you write? H, meth, prop, bute. क्या लिखेगा? H. Very good. Ethanoic. Now just see this. Ethane का ethane. E cancel करो. OIC. Ethanoic acid. इधर ये देखिए. OIC. Yes, I see. We had one economics teacher. हमेशा एक sentence के बाद I see. तो हम लोग एक student था. वो हमेशा काउंट करता था कि ये लेक्चर में 50 बार सर ने IC तो ये ना मुझे याद आ गया. तो I thought कि let me just share this particular economics teacher Mr. Joshi. I still remember we were in 9th standard. 50-60 साल के बाद भी हम लोगों को टीचर याद है. Why? Because they teach very well. ठीक है? So यहाँ पे economics and IC. Okay? We used to always have pan in his mouth. And used to teach. Okay? Very old person. Very old person. But he used to have the habit. But there's no. Okay, anyway, what is important over here? But we remember because that particular kind of, for example, teaching technique plus the way he used to speak. Here. So every sentence में क्या हो रहा था? Every 2-3 sentence के बाद I see. ऐसा करके उनको explanation में आ जाते. Anyway, now look at this. Ethanoic acid. Now this is. For example, ये क्या नाम है? This is, for example, 3 carbon atom का chain है. Propion. Propion. Now तुम बोलोगे सर ये propion ये सब कैसे याद है? This is called first fat. First fat. First fat means, for example, when the cow gives birth to the young ones, the first milk that the cow gives, which has got high protein matter. So first fat. क्योंकि फैट्स में ही प्रोटीन रहता है, मिल्क में प्रोटीन रहता है. इसलिए फर्स्ट पर और उसको अगर आप खाएंगे उसको क्या बोलते हैं? चीक बोलते हैं ना. You will find like a paneer. It's white color substance. पनीर जैसा लगेगा. Okay, people they have it. Why? Highly proteinous matter. ठीक है? फर्स्ट फैट. इसलिए उसका नाम है प्रोपियन. Propionic acid. ठीक है? What is the IUPAC name for this compound? Propane, propane, propanoic acid. Okay,
So you see, here what is important? Methane, methane का methane, ethane का ethane, propane का propane, butane का butane. Okay, 3 carbon atoms is propane. Propion has come from the word first, right? Acetum, acetic has come from the word acetum, which is vinegar. Then pungent. Okay, formic has come from the word formicus. ये याद रखो. इसलिए formicus का IC तक लेना है. और acid. Yes. Okay, sir. Yes, sir. Okay, let's come to this particular last family for now. Before the break, we actually want to have a break a little bit. Okay, let's see. The next family is what? Aldehyde. अभी aldehydes का similar है. It's same kind of thing. Why? That's why we are taking a comparison. Last two families also we take a comparison, so easy पड़ेगा. So if you take separately, your people, students are not having the patience to listen, and as a result, sometimes they actually what? Fumble. Okay, so let's understand aldehydes. Aldehydes का general formula क्या होगा? RCHO. What is the functional group? Sophie, functional group क्या है? CHO. That's CHO. Okay, here again, now this particular names have been derived from this, acid only. So इधर क्या हो जाएगा? R is equal to H डाल दीजिए. तो क्या हो जाएगा? HCHO. Okay, HCHO. यहाँ पे R CH3 CHO. Then C2H5 CHO. अब इसका नाम भी दें. This particular compound, okay, इसका common name क्या है? We are taking the same thing. Formic का फॉर्म लिखना है, ठीक है? IC and acid कैंसिल करना है and full word aldehyde अटैच करना है. Look at this. क्या हो जाएगा? Formaldehyde. Full word aldehyde. Formic acid का फॉर्म, application form का फॉर्म याद रखना है. Okay, formaldehyde, that is form and aldehyde. Formaldehyde. अब इसका IUPAC, now simple thing. IUPAC क्या है? Methane का methane, only one carbon atom. Now look at alcohol का last two letters we have taken, but in aldehyde the first two letters आपको लेना है. What is that? Al Kabir, Ali Baba, याद रखना. Al Kabir, very famous platform, online platform, Ali Baba from China. Okay, what is this? So यहाँ पे alcohol पे OL. But aldehyde में ethanol. इधर देखो यहाँ पे this is acetaldehyde. तो acid का acetic acid का IC और acid cancel करो. I'll put word aldehyde attached. Simple है. Okay, and here what is that? 2 carbon atoms. IUPAC always true number of carbon atoms. Remember. So ethane का ethane and then what? Ethanol. CHO देखेंगे तो aldehyde. Aldehyde का first 2 letters. Alcohol का last 2 letters. Okay, यहाँ पे क्या है? Propion, first fact, and full word aldehyde. What is that? Propanol. Now these, functional groups are always at the end carbon atom. So इसमें naming में हमेशा carboxylic acid में 1 लिखने की जरूरत नहीं. Why they are always on the terminal carbon atoms? Terminal means last carbon atom. So इसमें we'll have a short break and then we'll go for example, families, okay, short break ले लो. Those who want to go for wants to progress on that, you can just go and strictly from that.